Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies. I'm your computer teacher, and today we're going to start our very first chapter, which is computer memory and storage devices. So, without wasting any time, let's start the chapter. Name of a chapter is Computer Memory and its Storage Devices. Now, what are the topics we will discuss in this chapter? They are data versus information, data storage units, memory, types of memory, and storage devices. Before that, we have an amazing thought, which is the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Now, we have an activity which says name the devices that are shown in the given picture. So, first, this is a scanner, this is a microphone, this is a pen drive, and this is a memory card. Now, moving forward, there is a boy who says, Hi Kavya, if I ask you what's your school's address is, what would you say? Then she says, I would tell you my school address. And then he again says, From where would you retrieve that information? And she says, I will be retrieved from my memory. Now, he says exactly, do you know, just like humans, जो कंप्यूटर होते हैं वो भी स्टोर करके रखते हैं इंफॉर्मेशन को इन देयर मेमोरी. नाउ डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर्स आर लाइक सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियंस जो स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली. द टर्म डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली बट दे एक्चुअली आर नॉट द सेम. यानी कि डेटा और इंफॉर्मेशन को बेसिकली एक दूसरे के साथ यूज किया जाता है लेकिन ये दोनों सेम नहीं है. देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स एंड देयर पर्पस. नाउ डेटा क्या है? डेटा को हम डिफाइन कर सकते हैं एज कोई भी इंडिविजुअल फैक्ट्स, जबकि जो इंफॉर्मेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंटरप्रिटेशन है उन फैक्ट्स का. नाउ डेटा क्या है? डेटा डिराइव हुआ है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज नोन एज डेटम. तो जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज गिवन. नाउ डेटा इज अ रॉ. डेटा क्या होता है? रॉ होता है. अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं दैट नीड्स टू बी प्रोसेस, जिनके ऊपर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है. इन अनदर वर्ड्स जो डेटा है वो रेफर करते हैं किसी भी फैक्ट, नंबर, वर्ड, पिक्चर, साउंड और वीडियो को जो कलेक्ट या स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज. For example, data might include individual prices, dates, address, ages, names, temperatures, your school report cards, dates or distances. तो ये सब कुछ examples हो सकते हैं of data. When it comes to computers, data को represent किया जाता है in the form of zeros and ones pattern में that may be interpreted or indicate a value or fact. जैसे bit, nibble या byte. नाउ इसमें और भी होते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, exabyte, zettabyte, yottabyte, and so are the data measurement units. We have another cool fact which is data was formerly stored in punched cards which were soon replaced by magnetic tapes followed by hard disk drive. नाउ इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल डेटा है जो हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड मेक डिसीजन. डेटा इज गिवन कॉन्टेक्स्ट थ्रू इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज बीन स्ट्रक्चर्ड. इंफॉर्मेशन वो डेटा होता है जिसको स्ट्रक्चर्ड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है एंड उसका कुछ मीनिंगफुल वैल्यूज होती हैं फॉर द रेसिपिएंट. इसेंशियली जो इंफॉर्मेशन है वो एक रिजल्ट होता है किसी भी एनालिसिस का या इंटरप्रेटिंग का पीसेस ऑफ डेटा. वेयर एज जो डेटा है वो कुछ इंडिविजुअल फिगर्स, नंबर्स या ग्राफ्स होते हैं. इंफॉर्मेशन इज परसेप्शन टू दोज पीसेस ऑफ नॉलेज. नाउ डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन का एग्जांपल है. लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अ रियल लाइफ एग्जांपल. एक बुक है विच इज मेड अप ऑफ मल्टीपल पेजेस जो बहुत सारे वर्ड्स को कंटेन करता है which constitute data. Now, जब हम उन पेजेस को पढ़ते हैं, examine the material and process it in our own minds, तब वो इंफॉर्मेशन बन जाता है. That means जो हम उन पेजेस में पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं उन वर्ड्स को, वो सब तो डेटा है. लेकिन जब हम उसको अपने माइंड में प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या है? वो इंफॉर्मेशन बन जाता है. द की डिफरेंस बिटवीन डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन. डेटा एक रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है. इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड. Data contains raw figures and facts. Information, unlike data, provide करता है insight analyzed through the data collected.
डेटा डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पर्पस, बल्कि जो इंफॉर्मेशन होता है वो सर्व करता है एज इनपुट और insights and decision making. Dependent on the sources used to obtain data, no dependency on information. लेकिन information जो है वो data पे depend करती है. Data is not specific, but information is specific about certain things. डेटा स्टोरेज यूनिट्स कौन सी होती हैं? स्टोरेज यूनिट एक पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का विच इज एम्प्लॉयड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी प्रोसेस्ड। एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड। हमारे कंप्यूटर में जो भी चीजें होती हैं वो स्टोर होती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू फॉर्म अ फैक्ट और वैल्यू। इसको बोला जाता है बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स। बिट एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी कंप्यूटर मेमोरी की, एंड ग्रुप ऑफ 8 बिट जो होता है उसको 1 बाइट बोला जाता है। बेसिक मेजरिंग यूनिट्स ऑफ डेटा आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले आता है हमारे पास बिट। बिट क्या है? कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी डिजिट्स पे। कंबाइन करते हैं हम जीरोस और वंस को इन काउंटलेस पैटर्न्स, और ये जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं इनको ही बिट्स बोला जाता है। बिट्स आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज। निबल होता है जब हम 4 बिट्स का एक ग्रुप बना देते हैं तो वो एक निबल फाउंड करता है, और निबल कैन बी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय 1 हेक्साडेसिमल डिजिट। नाउ बाइट्स। बाइट्स क्या होता है? बाइट्स होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, उसको बाइट बोला जाता है। इनको हम यूज करते हैं टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, वेदर इट इज अ लेटर, नंबर और पंक्चुएशन। They are usually considered the foundational unit of data storage that everything else builds on. Kilobyte. Kilobyte is made up of 1024 bytes and denoted by KB. Megabyte. Megabyte is made up of 1024 kilobytes and denoted by MB. Gigabyte is made up of 1024 megabyte and denoted by GB. Terabyte is made up of 1024 gigabyte and denoted by TB. वर्ड। वर्ड एक यूनिट होती है ऑफ डेटा प्रोसेसिंग जो स्पेसिफिक होती है टू द गिवन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स। वर्ड एक बिट की सीक्वेंस होती है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वर्किंग मेमोरी टू द रजिस्टर ऑफ द प्रोसेसर। लेंथ ऑफ अ वर्ड इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। लार्जर वर्ड इंडिकेट करता है ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स को। नाउ मेमोरी। स्टोरेज स्पेस जो होता है कंप्यूटर के अंदर उसको मेमोरी बोला जाता है। कंप्यूटर मेमोरी इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पररीली या फिर परमानेंटली। बिसाइड्स हम मेजर करते हैं इस स्टोरेज कैपेसिटी को इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। मोर ओवर देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी एज पर द रिक्वायरमेंट। हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स होती है मेमोरी की एज पर आर रिक्वायरमेंट। विदाउट कंप्यूटर मेमोरी जो यूजर है वो एबल नहीं है टू सेव एनीथिंग एज वेल, विच मेक इट इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। नाउ 8 बिट्स बनाते हैं 1 बाइट। 1024 बाइट बनाते हैं 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बनाते हैं 1 मेगाबाइट। सिमिलरली मेगाबाइट्स बनाते हैं गीगाबाइट्स। 1024 गीगाबाइट्स बनाते हैं टेराबाइट्स। टेराबाइट्स बनाते हैं पेटाबाइट्स। पेटाबाइट बनाते हैं एक्साबाइट एंड एक्साबाइट बनाते हैं जेटाबाइट। टाइप्स ऑफ मेमोरी। ऑल्दो मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी कंप्यूटर की एग्जिस्ट करती हैं, मोस्ट बेसिक डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन प्राइमरी मेमोरी ऑफन कॉल्ड सिस्टम मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी जिसको कॉमनली बोला जाता है स्टोरेज। कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये स्टोर और रिट्रीव करती है डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को एंड इंफॉर्मेशन को। इसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। द सीपीयू जो होता है यहाँ पे वो डायरेक्टली एंड रैंडमली एक्सेस कर पाता है प्राइमरी मेमोरी को। हेंस जो प्राइमरी मेमोरी है उसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रैम भी बोल देते हैं। इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी और ये अपने डेटा लॉस कर देती है और इंस्ट्रक्शंस को जब भी पावर ऑफ होती है। प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स विच इज रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम विच इज रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या है? रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। डेटा और इंफॉर्मेशन जो भी हम इसके अंदर स्टोर करते हैं वो खो जाएगी अगर आपने, या इनकम्प्लीट रह जाएगी अगर जो हमारा कंप्यूटर है वो टर्न ऑफ हो गया। दैट्स वाई हम इसको टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। इसके भी 2 तरीके टाइप्स होते हैं, डायनेमिक रैंडम मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज DRAM एंड स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी विच इज SRAM। अब रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी क्या है? ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को कंटेन कर सकती है दैट वी कैन नॉट चेंज। इसके अंदर जो मेमोरी है वो परमानेंटली स्टोर होती है। यहाँ पे डेटा लॉस नहीं होता इवन इफ द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ। रोम इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर करता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर सो दैट हम जो यूजर है वो कभी भी उसको ओवरराइट नहीं कर सकता।
There are three types: programmable read-only memory (PROM), erasable programmable read-only memory (EPROM), electrically erasable programmable read-only memory (E). सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, ऑफ द कंप्यूटर, जो स्टोर कर सकती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली. इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू. जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हमारा सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता. इट इज अ चीपर इन कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, एंड जो भी डेटा इसके अंदर स्टोर होता है वो लॉस नहीं होता जब भी कंप्यूटर ऑफ हो जाए, बिकॉज ये नॉन वॉलेटाइल होती है इन नेचर. Secondary memory is slower than primary memory. Secondary memory is non-volatile in nature and have large storage capacity. Now, storage devices. Storage devices are the computer hardware. Storage devices computer का hardware होते हैं जो store करते हैं temporarily या फिर permanently data को. Storage devices is one of the basic elements of any computer device. It almost saves all data and applications in a computer. It comes with different shapes and sizes जो depend करते हैं as per the needs and functionalities. CPU access करता है इन devices को through an input-output channel, and data is first transferred to primary memory from secondary memory before being accessed. जो हार्ड ड्राइव्स या हमारे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होते हैं जैसे सीडी, डीवीडी, they are often used as secondary storage devices in modern computers. Some other storage devices are given below. पहला होता है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो स्टोर या रिट्रीव करता है डेटा को यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज, एंड इट इज अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी मॉडिफाइड और डिलीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट एनी प्रॉब्लम. कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी या डीवीडी. तो सीडी एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है. स्टैंडर्ड सीडी जो है वो स्टोर कर सकती है अप टू 700 MB ऑफ डेटा. इट इज सर्कुलर इन शेप. To access data stored in CD, computer system must have CD-ROM drive. ये बिल्कुल डीवीडी की तरह ही लिखती है, और डीवीडी रेफर करता है टू डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. ये स्टोर कर पाता है अप more than CD, and it can store 4.7 GB of data. There is a fact which says Ajay Bhatt developed the USB technology. Pen drive. Pen drives are also known as thumb drives, flash drives, and sometimes USB drives. They are also one of the most popular secondary storage devices. ये सबसे ज़्यादा popular secondary storage device है. It is basically a small portable storage device जो allow करता है हमें to store, rewrite and delete data easily. Next is Blu-ray disc. Blu-ray disc बिल्कुल CD और DVD जैसा ही होता है, बट ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है अप टू 25 GB. This technology is used to read a disk from blue violet laser. इसमें हम blue violet laser की मदद से हम डेटा को रीड कर पाते हैं, to which the information is stored in greater density with a longer wavelength. SSD क्या होता है? ये रेफर करता है टू सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड अ टाइप ऑफ मास स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो हमेशा एक हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह ही होती है. इट इज मच मोर रेजिलिएंट देन हार्ड ड्राइव as it does not require visual disk. There is a cool fact which says memory card is commonly found in digital cameras, printers, gaming consoles and other electronic devices. Lastly हमारे पास आता है cloud storage. Cloud storage is basically a collection of networked computer hardware जो provide करता है बहुत सारे aspects of computing in the form of online services. So just like its name, जो cloud storage है वो untouchable होता है and you cannot see it either, but आप control कर सकते हो इसको remotely. That means in cloud storage हम store करते हैं अपनी files and other items in the cloud, and data को store करा जाता है for a as long as you pay for it. जितना ज़्यादा आप जितनी देर के लिए उसको pay करोगे उतनी देर तक वो आपके items को store करके रखेगा. There are many companies जो cloud services provide करती हैं largely as Google, Amazon, Microsoft, etc. आप पे कर सकते हो रेंट फॉर द अमाउंट ऑफ स्पेस जो भी आपको चाहिए टू गेट मल्टीपल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. नाउ लेट्स रिमेंबर द चैप्टर. Data is raw and organized facts that need to be processed. Information is the result of analyzing and interpreting pieces of data. It is the smallest unit of computer memory. Primary memory main memory होती है कंप्यूटर की. RAM एक volatile memory है, ROM एक non volatile memory है. SSD refers to
Solid state drive type of mass storage technology है, which is similar to hard disk drives. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Data drives from the word, Latin word. A group of 8 bits is called byte. 1 terabyte is equal to, so 1 terabyte is equal to 1024 gigabyte. It is non-volatile storage device. So non-volatile is hard disk. Next is ROM. ROM is a non-volatile memory. Let's do the fill in the blanks of the chapter. Cache is raw and unorganized facts that need to be processed. Data. Cache is made up of 1024 gigabyte, terabyte. Cache is also known as internal memory, primary memory. Storage capacity of Blu-rays is up to 25 GB. Let's do true false. Information is raw facts and figures. False. Primary memory is the external memory. False. Hard disk is the storage device that stores and retrieves data using magnetic storage. False. Storage devices are the hardware used to store data temporarily or permanently. True. So students, this was a complete chapter about computers, memory and storage devices. I hope it is clear to you. Do revise it once at your own and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.